You're watching Truth versus Hype. We have come on this cold and rainy day to this village in Rajouri, about 4 hours west in the mountains near Jammu, which was witness to a terrible attack as the new year began, where close to 7 people have been killed in a multiple series of acts of violence. Almost every house here is marked with what ensued that day. The traces of it is, of course, the grief inside those homes and the presence now of armed security forces. This attack, the latest in a string of attacks targeting Jammu and Kashmir's Hindu minority. All those who were killed here were Hindu. Now the government claims, the ruling establishment, that since they've come to power, and especially all the more so after the abrogation of Article 370, that Jammu and Kashmir has now become safe for Hindus, that Kashmiri Pandits should start returning to the valley. But here, there is grief, of course, there is anger, and there are also questions, as many are asking, how is this any safer for us? That's what we'll attempt to decode on Truth versus Hype. Ten days later, they still mourn at the home of Deepak and Prince Sharma, the two brothers, the first target of the terrorists. Their mother, witness to the killings, still in shock. नौकरी कौन करेगा? मेरा कौन नौकरी करने वाला है यहाँ पे? मेरे सामने मेरे बेटू को गोलियां मारी पहले, फिर पाँव के साथ उनको जो जूते लगाए हुए थे, जूतों से जोर जोर से मारता था। जो लंबे वाला आदमी था ना, वो जूतों के साथ मारता था जोर जोर से। मेरा बेटा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मैं खुद माँ उस बेटे को देखती रही जब मेरे बेटे को मारा था। मैंने अपने बेटे स्कूल में जा जाके और बच्चों के मैं अपने खुद अपने बेटे के साथ आर्मी के अंदर 5 बार भर्ती करवाने के लिए अपने बेटे को आर्मी के अंदर लेके गई। अगर वो कैंप मुझे बोलेंगे ना उस कैंप में ले चलो, मैं खुद कैंप में लेके जाऊंगी सर। मैंने अपने बच्चे के साथ इतना योगदान दिया हुआ था, लेकिन दुश्मन लास्ट के टाइम जब उसकी भगवान ने रोजी लगवाई, सुख के दिन आने वाले थे, तो दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो पाई। बच्चा मेरा शरीफ था, उससे पता नहीं क्या क्या पूछते रहे। तो माता जी, आपने कहा 2 लोग थे वो? हाँ, 2 लोग थे। अच्छा, कुछ उनके मतलब पहचान के लोग थे? आपने पहले देखा था उनको कभी? नहीं, पहचान नहीं सर पाई उनके। जो उन्होंने मास्क पहने हुए थे, अच्छा, जो कैप्स वगैरह लगाई हुई थी, वो अफगानी जैसे लगाते हैं ना, गोल वाली, वो वाली लगाई हुई थी सर। उनके पास जो गन थी वो भी छोटी थी, और तो चेहरे पे मास्क था, लगाया हुआ था सर। हाँ, और जो शूज पहने हुए थे, यहाँ तक उन्हें पट्टियां बांधी हुई थी। तो एक आप कह रहे थे लंबा था और एक छोटे वाला था सर। अच्छा जी। और कुछ कह रहे थे वो या नहीं, बात वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ गोली चला रहे थे? और टांगों से छोटे वाले बेटे को मारे थे। गोली से ज्यादा उसने टांगे मारी हैं। टांगों से ज्यादा मारा है, गोलियां मार के लास्ट में उसने इतनी टांगे मारी हैं, लंबे वाले ने बहुत ज्यादा टांगे मारी हैं प्रिंस को। यहाँ फादर एंड सन थे, प्रीतम लाल जी और उनका बेटा शिशुपाल। The attackers then walked down the hill and fired and killed Pritam Lal and Shishupal, father and son, outside their home. यहाँ सबसे पहले उन्होंने प्रीतम लाल जी पे फायर किया, उनका आधार कार्ड चेक करके। अच्छा। और उसके बाद जो उनका बेटा शिशुपाल है, वो इस घर में था। ये उनके अंकल का घर है, ये लेफ्ट साइड पे। अच्छा। ये वाला, जैसे उसने यहाँ कुछ सुना, वो यहाँ से भागता हुआ आया, उसको इस जगह पे टारगेट किया गया। अच्छा। तो वो यहाँ उसको बुलेट लगी, यहाँ गिर गया, वो मर गया वो। तब हाँ, वो उसकी भी डेथ होगी। तब से ये मकान बंद है। अच्छा, तब से बंद है। और तभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। द डोर इज, आई मीन द हाउस इज क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ दिस इज वेयर द आईईडी ब्लास्ट यहाँ पे हुआ था क्या? ये देखो ना। ओ अच्छा, तो यहाँ पे उसको रखा गया था। हाँ, यहाँ रखा था। बच्चे यहाँ पे भी थोड़ा सा भी burn marks. A day later, an explosive device concealed by the terrorists at the Sharma home went off. Samiksha 16 and Vihan 4 both killed. Other children who were nearby still bearing the marks of the blast impact. ये क्या हो गया इसको? आपको स्प्लिंटर लगा यहाँ पे? इसकी लगी थी ना वो। अच्छा, तो आप सब यहीं पे थे जब हुआ? और इसके आप कह रहे थे कुछ कान में आपको?
क्या हुआ? ये ड्रम डैमेज। अब ठीक हो? The attacks mark a dangerous new turn in the Kashmir insurgency. कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे। So far it was the Muslim-dominated Kashmir Valley, in which Hindus are barely 2%, which has witnessed the spike of targeted killings. By our estimates, 13 Hindus killed in the 10 months in 2022. Now with the killings in Rajouri, the arc of targeted violence has reached Hindu-majority Jammu. Hours after the Rajouri attack, anger spilled onto the streets. The target of the protest so far has been the administration, Jammu and Kashmir's Lieutenant Governor. The government has rushed to control the damage in a manner rarely seen in the recent past. Dhangri village, much like the rest of Rajouri, has been turned into a mini fortress. As we can see here behind us, that since the attack on the village, the promised additional security has now come in. There's been, we're told, close to 18 companies, that's supposedly 1800 troops of the central paramilitary forces that have been brought into this entire area, and some of them are literally taking a deeper position in this village. They're positioned on this house here, which is overlooking the village. So the idea is to give those who have been subjected to the trauma of this attack a sense of protection. But is it now a little too much, too late, is the big question that people here are asking. An intense hunt for the attackers, suspected to be of the Jaish-e-Mohammed, is unfolding in the villages and forests nearby, so far without success. टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ऑपरेशन जारी हैं और इसके लिए जो पुलिस ने इनाम का भी जो है वो अनाउंस किया है और जो है वो 10 लाख इसमें इनाम रखा गया है। तो बाकी एक्स्ट्रा जो है कुछ फोर्सेस आए